ध्यान के उपरांत एक बार फिर से स्वागत आप लोगों का विनय पिटक के रविवार के ऑनगोइंग पार्ट में। आज हम अगले सूत्र की ओर जाएंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप खोलो ना, तब तक मैं एक सजेशन ये करता हूँ। जो अब अगला सेक्शन है ना, सेक्शन 16, वो बेसिकली जो प्रीसेप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट वो हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वही बिंदु हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जो कि प्रीसेप्टर की जो कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रीसेप्टर की तरफ। सो इफ देर इज द sort of one option is to skip it and move on to the next one. Otherwise we could also do it. I mean, it's a good reminder कि क्या क्या वो details हैं जो कि हमें बताए जाते हैं, but I thought I'll just flag that and then leave it up to uh, everyone to decide कैसे बढ़ना है. मंत्री, माय हम्बल सबमिशन इज कि हम उसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर एक बार क्विकली ऑन वन ओनली इन वन लैंग्वेज अदर देन टू, और जैसा आप आदेश हाँ दें। बेशक, आई मीन लाइक आई सेड, उसमें इतनी डिटेल है ना, इट्स एग्जैक्टली द सेम डिटेल जो हमने पिछली बार पढ़ी थी। बोल को ऐसे रखना है, कपड़े को ऐसे मोड़ना है, वो सब डिटेल है, एंड इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। सो बेशक वी डू ओनली इंग्लिश. व्हाट डू यू थिंक धर साहब? डू यू थिंक यू आर मिसिंग समथिंग इन दिस, और मे बी बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ रेपिटेशन इवन गोइंग फॉरवर्ड बेसिकली. I I don't know what how others feel, but if because English में काफी संक्षेप में दिया हुआ है तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ हमको लगे कि ये रिपीट हो रही है, we can move on. So you're saying basically we do the English version rather than both versions. Guys, जैसे निखिल ने सजेस्ट किया है, और उसमें भी देख लेंगे जहाँ रिपीटिशन होगा we can skip it with Yeah, yeah. due respect. जैसा आप कहेंगे skip कर देंगे. ठीक ठीक. ये 17 फिर थोड़ा बदल जाता है, बट 16 इज एग्जैक्टली द सेम. सो या मे बी वी डू इंग्लिश, और थोड़ा समय भी बच जाएगा. Will be a reminder also. Okay. तो इंग्लिश में मैं ही पढ़ देता हूँ, इसके उपरांत फिर मैं पाली में 17 से पढ़ दूंगा। दीपक कभी कभी आता है तो उसको मौका दो. व्हाई नॉट सर, व्हाई, माय प्लेजर। दीपक जी, ओवर टू यू। ओके, दीपक, मैसेज तुम्हें मिल गया ना? इसमें मैसेज था इस छोटे से उसमें. मैसेज मिस्टर मैसेज धर ने तुम्हें मैसेज भेजा इस हल्के से 3 शब्दों में. मैसेज पहले मैसेज मिल गया है। मिलता रहता है मैसेज, है ना? हाँ. तुम्हें तो मैसेज बार बार देते रहते हैं वो. ओके, and a preceptor should conduct himself properly towards his student. This is the proper conduct. A preceptor should help and take care of his student and their recitation, questioning, instruction. If the preceptor has a bowl but not the student, the preceptor should give it to him, or he should make an effort to get him one. If the preceptor has a robe but not the student, the preceptor should give it to him, or he should make an effort to get him one. If the preceptor has a requisite but not the student, the preceptor should give it to him, or he should make an effort to get him one. Meals and alms down. If the student is sick, the preceptor should get up at the appropriate time and give his student a tooth cleaner and water for rinsing the mouth, and he should prepare a seat for him. If there is a congi, he should rinse a vessel and bring the congi to his student. When he has drunk the congi, the preceptor should give him the water and receive the vessel. Holding it low, he should wash it carefully without scratching it and then put it away. When the student has gotten up, the preceptor should put away the seat. If the place is dirty, he should sweep it. If the student wants to enter the village, the preceptor should give him a sarong and receive the one he is wearing in return. He should give him a belt. He should put the upper ropes together, overlapping each over edge to edge, and then give them to him. He should rinse his student's bowl and give it to him while wet.
Before he's due back, the preceptor should prepare a seat and set out a footstool, a foot scraper, and water for washing the feet. He should go out to meet the student and receive his bowl and robe. He should give him a sarong and receive the one he is wearing in return. If the robe is damp, he should sun it for a short while, but shouldn't leave it in the heat. He should fold the robe, offsetting the edges by 7 centimeters, so that it doesn't become worn. He should place the belt in the fold. If there is an alms food and the student wants to eat, the preceptor should give him water and then the alms food. He should ask his student if he wants to drink. When the student has eaten, the preceptor should give him water and receive the bowl. Holding it low, he should wash it carefully without scratching it. He should then dry it and sun it for a short while, but shouldn't leave it in the heat. The preceptor should put away the robe and the bowl. When putting away the bowl, he should hold the bowl in one hand, feel under the bed or the bench with the other, and then put it away. He shouldn't put the bowl away on the bare floor. When putting away the robe, he should hold the robe in one hand, wipe the bamboo robe rack or the clothesline with other, and then put it away by folding the robe over it, making the ends face the wall and fold face out. When the student has gotten up, the preceptor should put away the seat and also the footstool, the foot scraper, and the water for washing the feet. If the place is dirty, he should sweep it. Bathing. If the student wants to bathe, the preceptor should prepare a bath. If he wants a cold bath, he should prepare that. If he wants a hot bath, he should prepare that. If the student wants to take a sauna, the preceptor should knead the bath powder, moisten the clay, take a sauna bench and go to the sauna. And after giving the student the sauna bench, receive his robe and putting it aside, he should give him the bath powder and the clay. If he is able, he should enter the sauna. When entering the sauna, he should smear his face with clay, cover himself front and back, and then enter. He shouldn't sit encroaching on senior monks, or shouldn't block the junior monks from getting a seat. While in the sauna, he should provide assistance to his student. When leaving the sauna, he should take the sauna bench, cover himself front and back, and then leave. The preceptor should also provide assistance to his student in the water. When the preceptor has bath, he should first come out, he should dry himself and put on his sarong. He should then wipe the water off his student's body, and he should give him sarong and then his upper robe. Taking the sauna bench, he should be the first to return. He should prepare a seat and also set a footstool, a foot scraper, and water for washing the feet. He should ask his student if he wants to drink. The dwelling. If the dwelling where the student is staying is dirty, the preceptor should clean it if he is able. When he is cleaning the dwelling, he should first take out the bowl and the robe and put them aside. He should take out the sitting mat and the sheet and put them aside. He should take out the mattress and the pillow and put them aside. Holding the bedlow, he should carefully take it out without scratching it or knocking it against the door or the door frame, and he should put it aside. Holding the bench low, he should carefully take it out without scratching it or knocking it against the door or the door frame, or he should put it aside. He should take out the bed supports and put them aside. He should take out the spittoon
and put it aside. He should take out the leaning board and put it aside. After taking a note of position, he should take out the floor cover and put it aside. If the dwelling has cobwebs, he should first remove them from the ceiling cloth, and then he should wipe the window and corners of the room. The walls have been treated with red orchard, and they're moldy. He should moisten a cloth, wring it out, and wipe the walls. If the floor has been treated with a black finish and it's moldy, he should moisten a cloth, wring it out, and wipe the floor. If the floor is untreated, he should sprinkle it with water and then sweep it. Try to avoid stirring up dust. He should look up for any trash and discard it. He should sun the floor cover, clean it, beat it, bring it back inside, and put I it think back. I can go. You understood that it is essentially exactly same thing, so we can go ahead. You can just read the headlines of each section and go. And this we can read, yeah. Spiritual support, etc. If the student becomes discontent with the spiritual life, the preceptor should send him away or have him sent away, or he should give him a teaching. Send him away का मतलब क्या हुआ सर? बनते जी बताएंगे. वो ऐसा करते हैं ना, कई बार ऐसा समझा जाता है कि जब किसी को डिसरोबिंग का ख्याल आता है तो उसको किसी दूसरी मोनेस्ट्री भेज दो जहाँ पे माहौल बदल जाता है. तो दैट्स क्वाइट अ स्टैंडर्ड वे टू अप्रोच discontent. If the student becomes discontent with the spiritual life, the preceptor should send him away or have him sent away, or he should give him a teaching. If the student becomes anxious, the preceptor should dispel it or have it dispelled, or he should give him a teaching. The student has a wrong view, the preceptor should make him give it up, or have someone else do it, or he should give him a teaching. The student has committed a heavy offense and deserves probation, the preceptor should try to get the Sangha to give it to him. The student has committed probation, deserve probation का मतलब यहाँ क्या, सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? Actually, Deepak, that's a technical word, हाँ. जो पाठ्यमुख रूल्स है ना, जो सुरेंद्र जी पिछली बार पूछ रहे थे, उसमें एक कैटेगरी है संगत दिसेसा रूल्स. तो उस संगत दिसेसा रूल्स के चार, देर आर 4 ways ऑफ, सो इफ यू कमिट अ संगत दिसेसा ऑफेंस, तो केवल जो स्टैंडर्ड कन्फेशन है उससे वो दे डजंट टेक केयर ऑफ इट. तो उसमें पहले आपको कन्फेस करना होता है, उसके बाद you are for some period put at the end of the queue, and then you get a, so that's called probation. उसके बाद आपको rehabilitation का मौका होता है. सो अब ये जो 3-4 आएंगे ना, वो सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसके, इस केस में प्रोबेशन का जो पाली है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक फॉर द परिभाषा है, फिर मान्यता होता है, एंड देन रिहेबिलिटेशन का मैं भूल रहा हूँ क्या है. बट ये सब हैवी ऑफेंस में ये सारे डिस्क्राइब करेंगे, ये 4 स्टेजेस. The student has committed a heavy offense and deserves a probation. The preceptor should try to get the Sangha and give it to him. If the student has committed a heavy offense and deserves to be sent back to the beginning, the preceptor should try to get the Sangha to do it. If the student has committed a heavy offense and deserves the trial period, the preceptor should try to get the Sangha to give it to him. If the student has committed a heavy offense and deserves rehabilitation, the preceptor should try to get the Sangha to give it to him. If the Sangha wants to deal with legal procedures against the student, whether a procedure of condemnation, demotion, banishment, reconciliation, or ejection, the preceptor should make an effort to stop it or reduce the penalty. But if the Sangha has already done the legal procedure against the student,
whether a procedure of condemnation, demotion, banishment, reconciliation, or rejection, the preceptor should try 12 student conduct himself properly and suitably so as to deserve to be released and try to get Sangha to lift that procedure. If the student's robe needs washing, the preceptor should show him how to do it or make an effort to get it done. If Can leave this, yeah. Okay. The robe we can need if there's anything. Yeah, let us discussion it now. I think the main thing here is that actually the preceptor, on account of seniority, etc., is not exempt from exactly the same, reciprocal Yeah. rules. I think that's the important lesson Yeah. to take from this whole thing. सो हम 17वीं सेक्शन पे चलेंगे, डिस्कशन ऑन डिसमिसल। परामित कथा। तेन कोपन समयेन सद्धिविहारिका उपध्यायेषु न सम्मा वर्तन्ति। ये ते भिक्खु अपिच्छा पे ते उज्जायन्ति क्षीयन्ति पिपाचेन्ति। कथं हि नाम सद्धिविहारिका उपध्यायेषु न सम्मा वर्तिष्ठन्तीति। अथ को ते भिक्खु भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं ते सच्चं भिक्खवे सद्धिविहारिका उपध्यायेषु न सम्मा वर्तन्तीति। सच्चं भगवति विग्रही बुद्धो भगवा पे कथं हि नाम भिक्खवे सद्धिविहारिका उपध्यायेषु न सम्मा वर्तिष्ठन्तीति पे विगर्हित्वा पे धम हि कथं कृत्वा भिक्खु आमन्तेषि न भिक्खवे सद्धिविहारिकेन उपध्यायं हि न सम्मा वर्तितव्यं। यो न सम्मावर्तेय आपत्ति दुःखटस्साति नैव सम्मावर्तन्ति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं। अनुजानामि भिक्खवे असम्मावर्तन्तं परामेतुम्। एवं च पन् भिक्खवे परामे तब्बो परामेमि तन् इति वा मायुध पटिक्कमि इति वा निहरते प्रत्यचीवरन् इति वा नाहं तया उपष्ठातव्यो इति वा कायेन विज्ञापेति वाचाय विज्ञापेति कायेन वाचाय विज्ञापेति परामितो होति सद्धिविहारिको न कायेन विज्ञापेति न वाचाय विज्ञापेति न कायेन वाचाय विज्ञापेति न परामितो होति सद्धिविहारिकोति। तेन कोपन समयेन सद्धिविहारिका परामिका न क्षमापेन्ति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं। अनुजानामि भिक्खवे क्षमापेतुन्ति नैव क्षमापेन्ति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं। न भिक्खवे परामितेन न क्षमापेतव्यो यो न क्षमापेय आपत्ति दुःखटस्साति। तेन कोपन समयेन उपध्याया क्षमापीयमाना न क्षमन्ति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं। अनुजानामि भिक्खवे क्षमितुन्ति नैव क्षमन्ति सद्धिविहारिका पक्कमन्तीति बिभभं बिभमन्तीति तिथिये सुपि संकमन्ति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं। न भिक्खवे क्षमापि मानेन न क्षमितव्यं यो न क्षमेय आपत्ति दुःखटस्साति। तेन कोपन समयेन उपध्याया सम्मा वतन्तं परामेन्ति असम्मा वतन्तं न परामेन्ति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं। न भिक्खवे सम्मा वर्तन्तो परामेतव्यो यो परामेय आपत्ति दुःखटस्य
न च भिक्खवे असम्मावर्तन्तो न परामे तब्बो यो न परामेय आपत्ति दुःखटस्साति पंचम हि भिक्खवे अंगे हि समनागतो सद्दिविहारिको परामे तब्बो उपज्झायं हि नादिमत्तं पेमं होति नादिमत्तो पसादो होति नादिमत्ता हिरि होति नादिमत्तो गारवो होति नादिमत्ता भावना होति इमे हि को भिक्खवे पंच अंगे हि समनागतो सद्धि विहारिको परामे तब्बो पंचं हि भिक्खवे अंगे हि समनागतो सद्धि विहारिको न परामे तब्बो उपज्झायं हि अधिमत्तं प्रेमं होति अधिमत्तो प्रसादो होति अधिमत्ता हिरि होति अधिमत्तो गारवो होति अधिमत्ता भावना होति इमे हि को भिक्खवे पंच अंगे हि समनागतो सद्धि विहारिको न परामे तब्बो पंचं हि भिक्खवे अंगे हि समनागतो सद्दिविहारिको अलं परामेतुम् उपज्छायं हि नाधिमत्तं पेमं होति नाधिमत्तो प्रसादो होति नाधिमत्ता हिरि होति नाधिमत्तो गारवो होति नाधिमत्ता भावना होति इमे हि को भिक्खवे पंच अंगे हि समनागतो सद्विहारिको अलं परामेतुम् इतना पढ़ लूं पहले On a later occasion, the student did not conduct themselves properly towards their preceptors. The monk of few desires complained and criticized them. How can students not conduct themselves properly towards the preceptors? They told the Buddha what happened. Is it true, monks, that they are acting like this? It's true, sir. The Buddha rebuked them. How can students not conduct themselves properly towards their preceptors? After rebuking them, he gave a teaching and addressed the monks. A student should conduct themselves properly towards his preceptor. If he doesn't, he commits an offense of wrong conduct. They still did not conduct themselves properly. They told the Buddha, you should dismiss one who doesn't conduct himself properly. And this is how he should be dismissed. If the preceptor conveys the following by body, by speech, or by body in the speech, I dismiss you, don't come back here, remove your bowl and robe, or you shouldn't attend on me, the student has been dismissed. If he doesn't convey this by body, speech, or by body in the speech, then the student hasn't been dismissed. The student who has been dismissed did not ask for forgiveness. They told the Buddha, you should ask for forgiveness. They still did not ask for forgiveness. Then the Buddha told the Buddha, one who has been dismissed should ask for forgiveness. If he doesn't, he commits an offense of wrong conduct. Preceptors who were asked for forgiveness did not forgive. They told the Buddha, you should forgive. They still did not forgive. The student left disrobed and joined the monastics of other religions. They told the Buddha, when asked for forgiveness, you should forgive. If you don't, you commit an offense of wrong conduct. Preceptor dismissed the students who were conducting themselves properly and did not dismiss those who were not. You shouldn't dismiss someone who is conducting himself properly. If you do, you commit an offense of wrong conduct. And you should dismiss someone who isn't conducting himself properly. If you don't, you commit an offense of wrong conduct. If a student has 5 qualities, he should be dismissed. He doesn't have much affection for his preceptor. He doesn't have much confidence in his preceptor.
He doesn't have much conscience in regard to his preceptor. He doesn't have much respect for his preceptors. He hasn't developed his mind much under his preceptor. The student has 5 qualities. He shouldn't be dismissed. He has much affection for the preceptor. He has much confidence in preceptor. He has much conscience in regard to his preceptor. He has much respect for his preceptor. He has developed his mind much under his preceptor. The student has 5 qualities. He deserves to be dismissed. He doesn't have much affection for his preceptor. He doesn't have much confidence in his preceptor. He doesn't have much conscience in regard to his preceptor. He doesn't have much respect for his preceptor. He hasn't developed his mind much under his preceptor. ये इन दो लाइनों में क्या अंतर है? ये ऑलमोस्ट रिपीटेटिव ही हो रही है. ही डिजर्व टू बी डिसमिस्ड एंड इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में था ही शुड बी डिसमिस्ड. इन दोनों को तो एक ही बात है, या क्योंकि उसके बाद सेम है, ही शुड बी डिसमिस्ड, ही डिजर्व टू बी डिसमिस्ड. सो पहला शायद एक काल्पनिक सिचुएशन है और यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन है. Then he shouldn't be dismissed and he doesn't deserve to be dismissed. फिर से सेम चीज आ रही है. So is there any difference in these two lines? Yeah, it seems like a repetition. Yeah. Right, sir. Looks like it. सर तत्कालीन में स्टूडेंट्स एडमिट करते थे वहां पे मोनेस्ट्री में, तो वो टाइम पे कैसा सिस्टम था सर? दे टू मतलब दे टू कम वॉलंटरली और इट वाज motivations to get admitted in these systems as a students, sir? बंदे जी बताएंगे. कामरे साहब क्या है, व्हाट इज योर क्वेश्चन? वॉलंटरली और एक्चुअली जैसे कि वहाँ पे जो जाना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स बचपन से मोनेस्ट्री में जाते हैं, अभी भी कुछ मतलब जाते हैं, तो वो टाइम पे बुद्धा के टाइम पे सर ऐसा सिस्टम था कि एवरीबडी शुड मोटिवेट देम चिल्ड्रंस, ऐसा था मतलब जैसे अशोक ने किया था अपने बच्चों को, इसी तरह से वो टाइम पे ऐसा कैसा था कि व्हाट वाज द, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ उसी टाइम पे मैक्सिमम पीपल्स वेयर रेडी टू सेंड टू द टू बिकम ए मॉन्क एक्चुअली. अभी आज की स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है उसमें कंप्लीट. दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो टाइम पे बुद्धा ज्यादा मतलब प्रोस्परस हो गया उसमें से. तो जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट वाज द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस दैट टाइम. आई डोंट नो फ्रैंकली. जो टेक्स्ट जिस तरह से आता है अभी आप देखिएगा इट विल कम, क्योंकि ये तो सारे एडल्ट्स हैं, है ना. एंड देन देयर विल बी सम प्रोविजन फॉर people who are younger than 20. बट एज फार एज आई एम अवेयर, ये जो बच्चों वाली प्रथा है ये तो काफ़ी लेटर है जहाँ तक मेरी जानकारी है. बट फ्रैंकली आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इसकी हिस्टोरिसिटी क्या है, जो ये सारा सामनेरा का सिस्टम है ना. आप उसी की बात कर रहे हो ना? यस सर, यस यस बिल्कुल. वो आएगा कुछ तो अभी आएगा आगे चल के सामने हाउ दैट सिस्टम स्टार्टेड. बट आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन इट वाजंट फॉर चिल्ड्रन. इट वाज मोर लाइक कोई 17 साल का था और उसने कोई दे वर नॉट. एक बच्चों का जिक्र एक्चुअली आता है जिसमें वो बताते हैं कि वो शाम को भूख के कारण रो रहे थे, एंड देन द बुद्धा सेड दैट गिव देम समथिंग और समथिंग लाइक दैट, जहाँ तक मुझे याद है. एंड दैट्स हाउ द सामने सिस्टम स्टार्टेड. सो आई थिंक इट विल कम, इसमें आगे आएगा.
Thank you, Gunjan. आगे पढ़ता हूँ। पंचं हि भिक्खवे अंगे हि समनागतो सद्धि विहारिको नालं परामेतुम् उपज्जायं हि अधिमत्तं पेमं होति अधिमत्तोपसादो होति अधिमत्ता हिरि होति अधिमत्तो गार्वो होति अधिमत्ता भावना होति इमे हि को भिक्खवे पंच अंगे हि समनागतो सद्धि विहारिको नालं परामेतुम् पच्चं हि विक्खवे अंगे हि समनागतं सद्विहारिकं अपरामेन्तो उपज्जायो सातिसारो होति परामेन्तो अनतिसारो होति उपज्जायं हि नादिमत्तं पेमं होति नादिमत्तो पसादो होति नादिमत्ता हिरि होति नादिमत्तो गारवो होति नादिमत्ता भावना होति इमे हि को भिक्खवे पंच अंगे हि समनागतं सद्विहारिकं अपरामेन्तो उपध्यायो सातिसारो होति परामेन्तो अनतिसारो होति पंचं हि भिक्खवे अंगे हि समनागतं सद्विहारिकं परामेत्तो उपध्यायो सातिसारो होति अपरामेन्तो अनतिसारो होति उपध्यायं हि अधिमत्तं पेमं होति अधिमत्तोपसादो होति अधिमत्ता हिरि होति अधिमत्तो गार्वो होति अधिमत्ता भावना होति इमे हि को भिक्खवे पंचंगे हि समनागतं सद्विहारिकं परामेन्तो उपध्यायो सातिसारो होति अपरामेन्तो अनतिसारो होतीति। इस सेक्शन को खत्म करते हैं। If a student has 5 qualities, he shouldn't deserve to be dismissed. He has much affection for his preceptor. He has much confidence in his preceptor. He has much confidence, he has much conscience in regard to his preceptor. He has much respect for his preceptor. He has developed his mind much under his preceptor. If a student has 5 qualities, the preceptor is at the fault if he doesn't dismiss him, but not if he does. The student doesn't have much affection for his preceptor. He doesn't have much confidence in his preceptor. He doesn't have much conscience in regards to his preceptor. He doesn't have much respect for his preceptor. He hasn't developed his mind much under his preceptor. The student has 5 qualities. The preceptor is at the fault if he dismisses him, but not if he doesn't. The student has much affection for his preceptor. He has much confidence in his preceptor. He has much conscience in regard to his preceptor. He has much respect for his preceptor. He has developed his mind much under his preceptor. तेन कोपन समयेन अन्यतरो ब्राह्मण। One comment, I'll draw your attention to this word. ऊपर करेंगे, यहाँ पे हर जगह पेमम शब्द इस्तेमाल किया गया। अधिमत्तंग means excessive, too much. So student should have excessive love for his affection for his teacher, and teacher should have excessive affection for his student. Now you know what Buddha's words were. The same word pemam is used for causing suffering and elsewhere, you remember? So you must see the context. Depending on the context, the word is being changed. Prem se dukh hota hai. This is a part of one of the gathas of Dhammapada. And here Buddha is saying student should have affection for his teacher and confidence and so on. So you can see the
difference in relationships being projected. The teacher should have affection for his student, and student should have affection first. Small question, sir. जी. If a student is dismissed in this manner, यहाँ तो लिखा है कि he joins other ascetics or something like that. Can he go to another monastery, same Buddhist monastery, and get himself admitted there? Is that provided for? I think Bhanteji should answer it. आप उसमें देख सकते हैं ना सुरेंद्र जी, that it is actually silent on that. So more or less जो समझ है वो ये है कि आप अगर I mean there is a lot of, again there's a lot of technicality. जो 5 साल से कम के हैं अगर वो डिसमिस होते हैं तो फिर उनको दोबारा से किसी और प्रीसेप्टर या टीचर के अंडर निश्चय डिपेंडेंस लेनी होती है ना. सो दैट इज़ वन रूट. कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो 5 साल के ऊपर के हैं उनको भी किसी कारणवश डिसमिस करना पड़ता है. तो ऑफ कोर्स दे आर फ्री टू गो, ऑल्दो दिस इज क्वाइट साइलेंट ऑन इट. लेकिन आई थिंक द कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस इज लाइक दैट. एंड फ्रैंकली कंटेम्प्रेरली ये सारी चीज़ें डिसमिसल वगैरह की मोर और लेस अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं आती हैं. तो सो दैट्स रियली वेयर थिंग्स आर. मुझे याद है आजाद सुमेधो अपनी किसी कई धम्मा टॉक्स में he talks about a fellow student who was particularly rude, and he told him that, of course, he was not a preceptor perhaps of that student, but he told him so in quite a blunt way, and that student had previous history of having gone from one monastery to another monastery and so on, and then he left after this. And Ajahn Chah told him, look, you have done a wrong thing, that because he probably now this was his last option, he doesn't have anywhere else to go. Some story like that. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. वो काफ़ी काफ़ी पॉपुलर है वो कहानी. और सुरेंद्र जी फ्रैंकली अभी भी ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स आप समझ ही सकते हैं ना, थोड़े डिफिकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं और I उनकी understand that. I understand that. तो उनकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी लिमिट हो जाती है. दे कैन ओनली स्टे इन लाइक अ फ्यू प्लेसेस. बट टेक्निकली देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि अगर आप एक जगह पे नहीं है तो आप दूसरी जगह एक जगह पे आपको अगर नहीं डिसमिस किया गया है तो आप यू कैन सर्टनली गो समवेयर एल्स. फिर वहाँ का जो सीनियर मंक होगा उसका प्रेरोगेटिव होगा ना कि वो उनको रिसीव एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं. जो पिछली जगह जहाँ से डिसमिस हुए हैं उनसे वो पूछताछ, अब तो क्योंकि कम्युनिकेशंस अवेलेबल है तो पूछताछ कर लेते हैं कि भाई क्या बात है, हम करें नहीं करें वगैरह वगैरह. तो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस तो सब इस तरह से हो गई है अब. I think I get the answer. Thank you. So that means Bhante ji, particular monastery से affiliation होना चाहिए monk का. इसमें तो देखो ऐसा, इसमें तो बेसिकली एक प्रीसेप्टर या एक टीचर के साथ कुछ रह रहे हैं है ना. और क्योंकि पहले हमने देखा ही हैज अलाउड सो दे आर लिविंग इन सम फॉर्म ऑफ कम्युनिटी. तो ये तो कम्युनिटीज की बात हो रही है यहाँ पे. ऐसी ऐसी कोई वो नहीं है. देयर इज नो सच स्टिपुलेशन दैट यू हैव टू बी एफिलिएटेड टू सम मॉनेस्ट्री. कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो लॉज हैं अलग अलग देशों के उसके हिसाब से वो चीज़ें अब हो गई हैं. बट बाय विनय देयर इज नो सच स्टिपुलेशन. And practice also is not so. I mean present. नहीं, Like प्रेजेंट प्रैक्टिस तो I- ऐसी कई जगहों पर है एक्चुअली. क्योंकि अगर आप आपका अगर जो मोनास्टिक आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनना है तो उसमें फिर यू हैव टू बी एफिलिएटेड टू अ मोनास्ट्री. करंट प्रैक्टिस तो है ऐसी. करंट प्रैक्टिस में तो जो इंडिपेंडेंट घूमने वाले हैं काफ़ी काफ़ी कम है. और इवन दे आर नोशनली एफिलिएटेड टू सम मोनास्ट्री और द अदर.
You might still be roaming around independently, but if you choose to carry a monastic identity card, then that will affiliate to some or the other monastery. कम से कम थाईलैंड में तो मैंने ये देखा है. आई एम नॉट सो फेमिलियर. मेरे ख्याल से श्रीलंका में भी ऐसा ही मोर और लेस ऐसा ही होगा सिस्टम, जहाँ तक मुझे पता है. So I'm thinking of a मतलब जैसे schools develop होते हैं, मैं तो जैसे present scenario से relate कर रही हूँ, तो that means there must be some head of the monastery, and he should take care of these kind of बिल्कुल. issues. करेक्ट करेक्ट. इनफैक्ट अब तो ब्यूरोक्रेसी इतनी हो गई है कि हेड ऑफ मोनेस्ट्रीज भी हैं और फिर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, हेड ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं. सो इट्स बिकम क्वाइट अ elaborate system of administration in respect to the monastic sangha. तो काफी वो होता है. So for example, हम लोग जाते हैं तो our cards are all signed by the entire range of bureaucracy. Thank you. तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पढ़ता हूँ. इसको पूरा पाली में पढ़ दूंगा, फिर दीपक जी इंग्लिश में पढ़ देंगे. तेनकोपन समयेन अन्यतरो ब्राह्मणो भिक्खु उपसंकमित्वा पभज्जं याचे तं भिक्खु न इच्छिन्सु पभजेतुं सो भिक्खुषु पभजं अलभमानो किसो अहोसि लूखो दुप्पन्नो उपड्डुप उपड्डुप जातो धमनी संथ तक्कतो अर्धशाखो भगवा तं ब्राह्मणं किसंयूखं दुब्बण्णं उपट्टुपट्टुकजातं धम धम निस्सन्थ तद्गतं दिस्वान् भिक्खु आमन्तेषि किं नुखोऽसो भिक्खवे ब्राह्मणो किसो लूको दुब्बण्णो उपट्टुपट्टुकजातो धम्म निस्सन्थ तद्गतोति एषो भन्ते ब्राह्मणो भिक्खु उपसंकमित्वा पभज्जं याचे तं भिक्खु न इच्छुसिं पभ्भाजेतुं सो भिक्खुषु पभज्जं अलभमानो किसो लूखो दुब्बण्णो उपट्टुपट्टुकजातो धम्म निस्सन्थ तद्गतोति अथ को भगवा भिक्खु आमन्त्रेषि को नुखो भिक्खवे तस्य ब्राह्मणस्य अधिकारं सरिसीति एवं बुद्धे आयस्मा सारिपुत्रो भगवन्तं एतद्वोच अहं खो भन्ते तस्य ब्राह्मणस्य अधिकारं सरामीति किं पन्त्वं सारिपुत्र तस्य ब्राह्मणस्य अधिकारं सरिसीति इद में भन्ते सो ब्राह्मणो राजगहे पिंडाय चरन् तस्य कटच्छु भिक्खं दापेसि इमं खो अहं भन्ते तस्य ब्राह्मणस्य अधिकारं सरामीति साधु साधु सारिपुत्र कतुं यूनो हि सारिपुत्र सपुरिसा कतवेदिनो तेन हि त्वं सारिपुत्र तं ब्राह्मणं पव्वाजेहि उपसंपादेहीति कथाहं भन्ते तं ब्राह्मणं पव्वाजेमि उपसंपादेमीति अथ को भगवा एतस्मिन् निदाने एतस्मिन् प्रकरणे धम्मि कथं कृत्वा भिक्खु आमन्तेषि यासा भिक्खवे मया तीनि शरणगमने हि उपसंपदा अनुज्ञाता तं अज्जतज्ञे पठिक्षिपामि अनुजानामि भिक्खवे यत्ति चतुर्थेन कम्मेन उपसंपादेतुम् एवं क्षुपन् भिक्खवे उपसंपादेतव्यो व्यक्तेन भिक्खुना पटिबलेन संघो यापेतव्यो सुडातु मे भन्ते संघो अयं इत्थनामस्य आयस्मतो उपसंपदापेक्षो यदि संघस्य पत्तकल्लं संगो इत्थनामं उपसंपादेय इत्थनामेन उपध्यायेन एषा यति सुडातु मे बन्ते संगो
अयं इत्थन्नामो इत्थन्नामस्य आयस्मतो उपसम्पदापेक्षो संगो इत्थन्नामं उपसम्पदादेति इत्थन्नामेन उपध्यायेन यस्मा यस्सा यस्मतो खमति इत्थन्नामस्य उपसम्पदा इत्थन्नामेन उपसम्पजायेन सोतुण्डस्य यस्य नखमति सौभासेय द्वितीयम्पि एतमर्थं वदामि शृणोतु मे भन्ते सङ्घो अयम् इत्थन्नामो इत्थनामस्य आयुष्मतोपसम्पदापेक्षो सङ्गो इत्थनामं इत्थसम्पदादेति इत्थनामेन उपध्यायेन यस्सायस्मतो खमति इत्थनामस्य उपसम्पदा इत्थन्नामेन उपध्यायेन सोतुण्डस्य यस्य न खमति सौभासेय तप्यम्पि एतमर्थं वदामि शृणोतु मे भन्ते सङ्घो अयं इत्थनामो इत्थनामस्य आयस्मतोपसम्पदापेक्षो सङ्घो इत्थनामं उपसम्पादेति इत्थनामेन उपध्यायेन यस्सा यस्मतो खमति इत्थनामस्य उपसम्पदा इत्थनामेन उपध्यायेन सोतुण्डस्य यस्य न क्रमति सौभासेय उपसम्पन्नो सङ्घेन इत्थनामो इत्थनामेन उपध्यायेन खमति सङ्घस्य तस्मात् तुर्हि एवमेतं धारयामि इति तेन कोपन समयेन अन्यतरो भिक्खु उपसम्पन्न समन्तरा अनाचारं आचरति भिक्खु एव माहंसु मावुसो एव रूपं अकाशी नेतं कप्पतीति सो एव माह नेवाहं आयस्मन्ते याचिं उपसम्पादेतमन्ति किस्मं तुम्हें अयाचिता उपसम्पादिताति किच मंग तुम्हें अयाचिता उपसम्पादिताति भगवतो एतमर्थं आरोचे सुं न भिक्खवे अयाचितेन उपसम्पादेतव्यो यो उपसम्पादेय आपत्ति दुःखटस्य अनुजानामि भिक्खवे याचितेन उपसम्पादेतुम् एवं च पन भिक्खवे याचितव्यो तेन उपसम्पदापेक्षेन सङ्घं उपसङ्कमित्वा एकं सङ् उत्तरा सङ्गं करित्वा भिक्खूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निषीदित्वा अञ्जलिपगृहीत्वा एवमस्य वचनीयो सङ्घं भन्ते उपसम्पदं याचामि उल्लुम्पतुमं भन्ते सङ्घो अनुकम्पम् उपादाय इति द्वितीयम्पि याचितव्यो तृतीयम्पि याचितव्यो व्यक्तेन भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो ज्ञापेतव्यो शृणोतु मे भन्ते सङ्घो अयम् इत्थनामो इत्थनामस्य आयस्मतो उपसम्पदापेक्षो इत्थनामो सङ्घं उपसम्पदं याचति इत्थनामेन उपध्यायेन यदि सङ्घस्य प्रत्यकल्लं सङ्घो इत्थनामं उपसम्पदायेय इत्थनामेन उपध्यायेन एषा यति बस थोड़ा सा ही है, अगर आप बोले इट इज जस्ट अ रेपिटेशन, यहाँ Yeah. तक कर लो ना. ऑलराइट, ठीक है सर. Over to you, Deepak. On one occasion, a Brahmin went to the monks and asked for the going forth, but the monks declined. As a result, he became thin, haggard, and pale, with veins protruding all over his body. The Buddha saw him and he asked the monks, "Why is this Brahmin looking so sickly?" They told him what happened. The Buddha said, "Now, does anyone remember any act of service from that Brahmin?" Venerable Sariputta replied, "I do, sir." "What service do you remember, Sariputta?" "When I was walking for alms good here in Rajgara, the Brahmin gave a ladle full of food." Good Sariputta. Good Sariputta. Superior people have gratitude, but
Well, then Sariput, give the Brahmin the going forth and full ordination. But how should I do it? The Buddha then gave a teaching and addressed the monks. From today, I rescind the full ordination through the taking of 3 refuges. Instead, you should give the full ordination through a legal procedure consisting of 1 motion and 3 announcements. And the ordination should be like this. A competent and capable monk should inform the Sangha. Please, Venerable, ask the Sangha to listen. So and so wants a full ordination with Venerable so and so. If the Sangha is ready, it should give the full ordination to so and so with so and so as its preceptor. This is a motion. Please, Venerable, I ask the Sangha to listen. So and so wants full ordination with Venerable so and so. The Sangha gives a full ordination to so and so with so and so as preceptor, and any monk who approves of giving full ordination to so and so with so and so as a preceptor should remain silent. Any monk who doesn't approve should speak up. For a second time, I speak on this matter. Please, Venerable, I ask Sangha to listen. So and so wants a full ordination with Venerable so and so. The Sangha should give full ordination to so and so with so and so as his preceptor. Any monk who approves of giving the full ordination to so and so with so and so as preceptor should remain silent. Any monk who doesn't approve shouldn't speak up. For the 3rd time, I speak on this matter. Please, Venerable, I ask Sangha to listen. So and so wants the full ordination with Venerable so and so. The Sangha should give the full ordination to so and so as his preceptor. And monk who approves of giving full ordination to so and so with so and so as his preceptor should remain silent. Any monk who doesn't approve should speak up. The Sangha has given the full ordination to so and so with so and so as his preceptor. The Sangha should approve. The Sangha approves it, therefore remains silent. I'll remember it thus. On later occasion, a monk immediately misbehaved after his full ordination. The monks told him, don't do that, it's not allowable. But I didn't ask you to ordain me. Why did you ordain me without being asked? They told the Buddha. You shouldn't give the full ordination to someone who hasn't asked. If you do, you commit an offense of wrong conduct. If I allow you to give full ordination to someone who has asked, and this is how they should ask. After approaching the Sangha, one who wants the full ordination should arrange his upper robe over one shoulder, pay respect at the feet of the monk. He should then squat on his heels and raise his joint palms and say, Venerables, I ask Sangha for full ordination. Please lift me out of compassion. And he should ask 2nd and a 3rd time. A competent and capable monk should then inform the Sangha. Please, Venerable, I ask the Sangha to listen. So and so wants a full ordination with Venerable. So and so is asking the Sangha for full ordination with so and so as his preceptor. The Sangha is ready, it should give the full ordination to so and so with so and so as his preceptor. This is the motion. Please, Venerable, I ask Sangha to listen. So and so wants a full ordination with Venerable so and so is asking the Sangha for full ordination with so and so as a preceptor. The Sangha gives a full ordination to so and so with so and so as a preceptor. Any monk who approves of giving the full ordination to so and so with so and so as preceptor should remain silent. Any monk who doesn't approve should speak up. For 2nd time on this matter, for 3rd time on this matter, the Sangha has given the full ordination to so and so with so and so as his preceptor. The Sangha approves it, therefore remains silent. I remember it thus.
Bantaji, can you explain to me the significance of technical significance of full ordination versus something else? You will see what will happen is that there will arise the need for what is called going forth. प्रवज्जा और उपसंपदा, ये दो चीजें कहते हैं. और टिपिकली जो इनिशियल होता है दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सामनेर्स, जो अपने कामले साहब जो कह रहे थे. सो द ऑर्डिनेशन इज इन typically in two stages. First, there is the going forth as a novice, where you take on 10 rules, and subsequently there is what they are calling here full ordination, उपसंपदा. अब ये full ordination एक English translation है, जो उसका पाली है वो तो सिर्फ उपसंपदा है ना. So that doesn't refer to full or half. But because there have been subsequent developments, therefore the English translation full ordination then retrospectively makes much more sense. You could also just call it ordination, basically. So does that And does going forth also have a similar procedure? Going forth has a slightly simpler procedure. It's not so elaborate. That is applicable. Now what they do is, and you see what happens is that the rules are evolving, Surinder ji. So I am currently speaking 2,500 years down the line, where we have the full evolution available with us. Here, there is only so you can already see the evolution. पहले 3 refugees दे रहे थे. पहले वो सिर्फ कह रहे थे कम भिक्खु, ए ही भिक्खु. That was the ordination procedure, है ना. फिर वो थोड़ा रिफाइन हुआ, उन्होंने 3 refugees दिए. That became the ordination procedure. अब यहाँ पे देखिए, आप वो कह रहे हैं कि आप अब he is rescinding the method of 3 refugees as ordination, and he's introduced some elaboration कि एक कोई एग्जिस्टिंग मंक ये एक प्रस्तावना देगा, प्रपोज करेगा, और उसको 3 बार प्रपोज करेगा, and then if nobody objects to it, then it is considered to be an ordination. Now you will see this will evolve further. इसमें अब कई सारे राइडर्स ऐड हो जाएंगे. सो कुछ बीमारियां होंगी, अगर वो होंगी तो आप ऑर्डेन नहीं कर सकते हो, उसकी ओरिजिन स्टोरीज आएंगी. जैसे फिर वो आएगा, अगर आप पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो नहीं ऑर्डिनेट कर सकते, वो सब आएगा. इफ यू आर इन गवर्नमेंट मिलिट्री सर्विस, देन यू कांट ऑर्डिनेट. सो स्लोली वी विल सी दिस इवॉल्व. Okay. So my suggestion is that we follow it as the evolution happens, and then it'll fall in place. Okay. Rather than my describing the current situation, because then it's very it's very confusing. I get it. वहां से यहाँ कैसे आ गया? But we can already see the stages of evolution. और ये जो सारे rules हैं वो बिल्कुल इसी तरह से evolve हुए हैं कि एक स्थिति सामने आई और उसको the Buddha responds to it and forms a rule. But very instructively for us, he himself is willing to change his own rules that he has himself formulated. So there isn't this notion कि एक बार मैंने कह दिया and then that's it, The rules will evolve and he will himself rescind his own sort of formulations. So from a dharma point of view, that's also, I would say, very instructive. बंते जी, मेरा एक छोटा सा साइड का क्वेश्चन है, नॉट वेरी रेलेवेंट. ये हर बार हम 3 बार क्यों रिपीट करते हैं? अनाउंसमेंट 3 बार करें जी, बुद्ध के शरण में जाएं, संघ के शरण में जाएं, धम्म के शरण, वो भी 3 बार क्या? व्हाट इज सिग्निफिकेंट 3 टाइम्स? ये पहले भी आया था, एंड आई एम आल्सो नॉट श्योर, एंड वी शुड आस्क धर साहब के क्यों है. मैंने इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया. आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले भी ये सवाल उठ के आया था इसी सुबह के सत्र में. और मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, मुझे तो यही मिला कि उस समय ये प्रथा थी, ना केवल जो बुद्ध का संघ था उसमें, बट जनरली उस इलाके में प्रथा थी. दिस इज एज फार एज आई हैव बीन एबल टू डिटरमिन. बट धर साहब, डू यू नो द हिस्टोरिसिटी ऑफ दिस 3 times business? One senior monk का जोक ये था, क्योंकि कई बार एक समय is not enough, you have to do something 3 times, and that's why they do it 3 times. So that's just a joke, but I don't know if there is anything. Yeah, I don't know that really, because people give their own explanations now. That is a different thing. कि भाई 3 बार नमस्कार करना है तो एक बार आप बुद्ध को करो, धम्म को करो, संघ को करो, या एक बार अनिच्छा हमारे को बताया जाता था कि when you bow down
once you see, understand anicca, that time you understand dukkha, that time you understand anatta. Now, these are all explanations being given now, but in the literature I don't find any. It is just a convention which existed at that time. कोई In लॉजिक fact, तो होगा नहीं, हमें पता नहीं है, कुछ लॉजिक तो होगा इसका, आई डोंट नो, Maybe, I don't know. लॉजिक तो होगा। ठीक है, इट्स ओके। बंदे जी, मेरे को वो जो एक्सट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा था उससे ही संबंधित एक क्वेश्चन, वो ऐसा साउंड कर रहा था जैसे कि somebody like there is a preceptor and student, and there is one who is making resolution to Buddha at that point of time. ऐसे ही मैं समझी हूँ, इज इट राइट वे? बुद्धा की बात नहीं ना, वो तो उन्होंने कह दिया ना, he has introduced a preceptor 2-3 हफ्ते पहले। हाँ, he पहले। said कि भाई मेरे अलावा भी लोग कर सकते हैं, that permission he gave। तो उस व्यक्ति को प्रिसेप्टर कह रहे हैं। नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि प्रिसेप्टर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप को यहाँ पर मतलब लाइक रिकग्निशन है, By the Sangha. है ना? By the Sangha. बाय द संघा। हाँ, so what's the question? No, I mean, it is not just the student who is taking refuge actually, or just ordination, simple. It is also the preceptor, I think so, is also being recognized. I mean, I don't know whether it's there on the last occasion. I'm missing something actually. Does somebody else follow what Poonam is getting Yeah, at? preceptor has agreed, na? The student has made a request to a preceptor, and student is requesting, preceptor is agreeing, yes, I am willing to take a student, and the whole Sangha is the witness to it. That's how I understand the whole process. Yeah, yes. So, matlab ordination के साथ साथ preceptor is also like he is also taking responsibility of a student Yeah, of course. before Sangha. Yeah. Actually वो और आएगा अभी आगे, वो जो taking responsibility वाला है ना, there'll be some episodes and then he will specifically introduce the element of निश्चय, वो भी आएगा। I mean, but you're right, yeah, I mean you're right now, to the extent that he's giving ordination, he has some responsibility, but you will see in the what will happen is that he'll give ordination and then he'll disappear. So then the Buddha will say, no, you can't disappear, you have to support your student for this much time and so forth. That will come just now. Yeah, I mean, you can see how the rules have evolved. That's very interesting. यहाँ पे भी रूल इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि मॉन्क्स ने किसी को वैसे ही डिसमिस कर दिया, हमें नहीं देनी तुमको ऑर्डिनेशन. So he made the whole Sangha formally responsible for deciding this. So that you can see slowly the, जैसे बंते जी बता रहे हैं, slowly the rules will evolve. जैसे जैसे कोई ऐसा काम हो जाएगा जो कि उनको भगवान को लगता है शायद ये it has not been taken care of, so new rules are coming. For example, with respect to children, I mean, not getting permission. This comes because his father protests against the ordination of Rahula. So he says, yes, then that rule is introduced. Then the general comes to the Buddha and says, हमारे monks soldiers तो अब ordination कर रहे हैं, तो फिर army का क्या होगा? Then he makes that rule. So there are rules have been formulated with special circumstances, जैसे बंते जी बता रहे थे. So it's very enlightening to see that a fully enlightened being is also willing to change his regulations depending on situation. तो कोई शीलवत परामर्श जैसी कोई चीज नहीं है वहां पे. हम लोग तो एक रूल बना के फिर we just stick to it like anything. These are not precepts in this. These are not 5 precepts which are being moderated, but the regulations regarding certain activities. So the regulations can be altered depending on the circumstance, the age in which we are now living, and so on. सर आपने भिक्खुनीज का भी दिया था एक वीडियो, देखिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, बट Yeah. it has not been evolved. I mean, so many years now
बट देयर इज नो ठीक है। नॉट इवन रिकग्निशन, तो बहुत दूर की बात लगती है, ऐसे लगता है। अभी तो वो शी वाज डूइंग जस्ट डॉक्टरेट, पीएचडी, वो तो नॉट अ मंक। या बर्मीज ट्रेडिशन की, ओ सॉरी, तिब्बतन ट्रेडिशन की बात है ना। तो वो तो उसमें उसमें उस वीडियो में भी दलाई लामा कहते हैं ना, ये मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है, बिकॉज वो विनय के रूल है, मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। So there are arguments. I think Banteji can answer it. We आई tried to मीन ask this question to Ayan Samedo in the very first meeting we had, and one of our Upasikas asked him, and he said, "जितना possible था उतना हमने कर दिया है, उससे ज़्यादा possible नहीं है, because there's a country whose rules and regulations are there, and there are certain expectations." जैसे उसमें भी वो समझाते हैं ना दलाई लामा के, भाई there should be a abbot and fully ordained nun available to give ordination to that. That is not available. Now, how to break that is a $1 million question which Bhante ji can answer. बट आई थिंक सो 2500 years वी आर नॉट, सर। मतलब हम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो who can be fully ordained, or we can, I mean, why ऐसा I'm नहीं है ना, thinking so let me actually. clarify, पूनम, एक मिनट, ऐसा नहीं है that there are no bhikkhunis today, that's not the case. Yeah. Okay, there are elements that don't recognize जो अभी भिक्खुनियां हैं as correctly ordained, लेकिन there are equally elements that recognize, और there are elements that are also willing to ordain. तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये गलत समझ है। हमारा जो अजान शाह ट्रेडिशन है उसमें अभी फुली ऑर्डेन्ड भिक्कुनीज का प्रावधान नहीं है, दैट इज द थिंग। बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ भिक्कुनीज, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। एंड द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स वो नहीं मानते हैं, जैसा धर साहब समझा रहे हैं, देर आर टेक्निकलिटीज ऑफ इट, क्यों नहीं मानते हैं। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो उसको मानते हैं और ऑर्डेन करते हैं, और दुनिया है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये जो समस्या है वो इस पिक्यूलियर हमारे ट्रेडिशन की बात है। नहीं, क्या बहुत आई मीन आई एम नॉट, आई डोंट नो, बट मेरे I'll send एक you जगह पढ़ा है मैंने, वहां पर सबको भिक्खुनी संघा इज नॉट correct recognized. according to some people जो विनय को इस तरह से पढ़ते हैं, बिल्कुल वो सही बात है, बट इट्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। एक और पर्सपेक्टिव है जिसमें ऐसा नहीं है। तो जैसे माय क्वेश्चन, मैं एक्चुअली, मेरे को क्वेश्चन कहाँ से आया, वो ये कि जब सक्षम जब गए थे, और जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड यू ऑल्सो एग्रीड दैट he is able to think beyond him, that beyond his needs, he was taking care of 3 4 monks and planning it. So एक फीलिंग डेवलप करना अपने से अधिक, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं अपना नहीं सोच रही हूँ, दूसरे का सोच रही हूँ, और उसके लिए काम करने के लिए आई एम फैसिलिटेटिंग, या जिसपे, तो ये जो भाव है, दिस भाव इन वुमन, आई वाज इंट्रोस्पेक्टिंग कि क्या हम ऐसे डेवलप करते हैं, हम अपने फैमिली सिनेरियो में भी कहा जाता है कि पेरेंट्स, भाई बहन, फैमिली जहाँ पर है, हस्बैंड हो गया फिर, बट स्टिल इट कन्फाइंस टू अ फैमिली। आता तो है ये भाव, लेकिन ये भाव बहुत ही छोटे लेवल पे रह जाता है, इट डजंट गो बियॉन्ड। पता नहीं मैं बोल, आप लोग कैसे बात समझेंगे, इट नहीं, डजंट गो बिल्कुल ठीक है, बियॉन्ड बिल्कुल पीपल। आप, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ये दो अलग इश्यूज हैं, है ना। ना ना, मैं एक मतलब आई एम जस्ट कि इनकलकेटिंग दोज क्वालिटीज ऑफ अ भिक्खू, बिकॉज दिस इज अ, इट इज अ वे टू इनकलकेट ना, आपको जो, अगर आपकी ये क्वालिटीज का थोड़ा संवर्धन अधिक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लीड, इट विल लीड टू, मतलब संघा ऑर्डिनेशन के लिए। सो आई मीन दैट्स व्हाट आई सी कि भाई आप क्वालिटीज आप करते हो ना, तभी तो आप मंक बनने का विचार करते हो। अब ये क्वालिटीज ही नहीं आएगी तो कोई मंक बनने का कैसे विचार करेगा।
बिल्कुल मैंने ठीक बात है, ये तो बात बोल दी करें। तो गंदी जो जी। विमेन्स ऑर्डर है, जो नन्स का ऑर्डर है, उसका हम जो भी नाम दें उसको, है ना, वो ऑर्डर तो है हमारे पास। हमारे ट्रेडिशन में हम उसको शीलधार कहते हैं, और जैसे मैंने बताया भिखुनिया तो है ही। बर्मीज में उसको सायाले कहते हैं, वो अलग अलग नाम है उसके। तो वो तो स्थितियां उपलब्ध हैं ही। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इट्स नॉट लाइक हमारे पास फीमेल मोनास्टिक्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और हमारे जिसकी यहाँ भी आई थी ना, आई भी तो थी धमारामा में। हाँ आई थी बट हाँ आई थी। नहीं। And women had the opportunity to serve them in the same manner as men have opportunity to serve the bhikkhus. There were people who were doing it. हम लोग तो अंदर ही नहीं घुसे अच्छा। जब अजान चंदाश्री आई, और सबसे ज्यादा टाइम के लिए तो वही आई, अजान चंदाश्री, अजान सुंदरा। वो 10 दिन, पूरे 9 दिन की रिट्रीट की उन्होंने। किसी ने नहीं की, और किसी ने 9 दिन की रिट्रीट। और उन दिनों नो मैन वेंट इनटू द थर्ड फ्लोर। सो सेम अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल। बिकॉज जैसे नाम नहीं है, वो रैंक नहीं है, तो हाउ डज इट मैटर टू अस रियली एज एज ले पर्सन्स? इट डजंट मैटर टू अस कि उनका रैंक भिखुनी है कि शीलधारा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अजान, दे आर वी कॉल देम अजान चंदा श्री, अजान सुंदरा, एंड जस्ट एज वी कॉल्ड अजान अमरो, अजान सुमेधो। हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं है। बट सर अब ऐसी बात करेंगे तो बिल्कुल चलिए, वैसे तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो एक बार ठीक है सर। थैंक यू। आपको आई वुड एनकरेज यू, है ना, आप जरूर जो ट्रैवलिंग विमेन मोनास्टिक्स होती है ना, डू डू लुक सॉर्ट ऑफ प्ले द सक्षम रोल विद देम, यू विल रियली, इट्स रियली वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल। सो जितने भी आप दिन निकाल सकें, एंड आई एम हैप्पी टू मेक कनेक्शंस। कई कई ट्रैवल करती हैं इस तरह से, और उनको जरूरत भी होती है इस तरीके से उपठक्स की, है ना। जितनी जैसे मेल्स को होती है वैसे ही फीमेल्स को होती है। तो जरूर करिए। I'm very happy to make that connection. आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसका बहुत, it has a great like Saksham was describing, it या has many many benefits. So let's do that by all means. Issue ये है ना that he was really able to take that time out. कितनी sacrifice उसकी तरफ से रही होगी, you know, it's also नहीं नहीं, that. वो तो है ही, एक उसने भी अपने एक लिया होगा कि भाई मुझे करना है। तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाई माय क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई इट हैपेंड कि मुझे भी लगा कि वन शुड डेवलप दिस काइंड ऑफ बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटीज। 100%. I'll be thankful if you can share. Yeah, साधु let's साधु do that. साधु। गुड। और बनते जी, अच्छा, ओके, आई थिंक रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं, मैं सिर्फ ये कहा था कि जैसे अजान चंदाश्री आई थी, तो आई हैड सम टाइम टू expose myself to her discourses, and she was equally wonderful. उसमें कोई फर्क नहीं था, जो दूसरे अजान आते हैं और ये चंद्रश्री आई थी, she was equally clear and knowledgeable. तो उसको मोनेस्टिक ट्रेडिशन में फिर भी इक्वलेंट नहीं माना जाता? I was wondering this from the current discussion. हमारे ट्रेडिशन में तो हम उसको इक्वली मानते हैं, शील धारा को, तभी तो धरसा बता रहे हैं। वही पद, वही नॉमेनक्लेचर्स उनको भी दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। Okay. चलिए, एंड आज की डिस्कशन में बनते बस एक लाइन सर मुझे बताना था, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें जो बोलते हैं ना कि काइंडली अपलिफ्ट मी आउट ऑफ कंपैशन, ये बहुत ही सुंदर लाइन लगी, जिसमें हम शरण इसलिए जा रहे हैं कि हम तो गिरे हुए हैं, एंड आउट ऑफ करुणा हमें उठा लीजिए, बाकी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अपार्ट। आई लाइक दिस लाइन। सो सर जैसा आप आगे इंस्ट्रक्ट करें। इट्स रिक्वेस्ट बनते जी फॉर तो सुरेंद्र जी, जस्ट ब्रीफली, आपने, यू रिमेम्बर 3 या 4 हफ्ते पहले आपने ये भी पूछा था, हु इज द नरेटर, एंड आई डोंट नो, इट स्लिप माय माइंड। एक वेनरेबल ओपाली हैं, ही इज बेसिकली द रिसाइटर ऑफ द एंटायर विनय पिटक, जस्ट लाइक आनंद इज, वेनरेबल आनंद इज दैट ऑफ द। Right. Thank you. सो हम भी इसी तरीके से जो हम लेसन्स ले रहे हैं विनय के, विनय पिटक के एवोल्यूशन से, हमारे मन में भी, हमारे जीवन में भी इसी तरीके से धीरे धीरे एक एवोल्यूशन की प्रक्रिया बनी रहे,
and maybe also have conditions conducive for that evolution to happen. Let's make that aspiration as we close this morning. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadim Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namam. Three bows to Bhante ji before we close today's session. Namami Bhante. Tutiyampi. Tatiyampi. Thank you, everyone. Namaskar. Thank you.